बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये टोफल सीरीज़ है फॉर द बिगनर्स। आज के लेसन में हम कंपैरिजन को वेरी इन डेप्थ स्टडी करेंगे, उनकी कंप्लीट ग्रामर रूल्स को और इसकी डिफरेंट टाइप्स को। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके, सो what is comparison? Comparison is actually used to indicate the degree of difference with it comes to adjectives or and adverbs, and that difference can be either equal or unequal. So mainly जब आपने कोई comparison में करना है between adjectives, it comes to differences with the adjectives या adverbs, so that can be either you can find them equal or unequal, and there are many other differences as well, but precisely mainly equal या unequal ही हम difference को या comparison को draw करते हैं. Now starting off with the first one, which is an equal comparison made. Now an equal comparison indicates that कि आपकी जो दो entities जिनको आप compare कर रहे हैं, they are not or they are either equal in positive sense or they are not equal in when it comes to the negative sense. Exactly the same. Equal हैं दो entities exactly same when it comes to positive, या equally negative हैं equally when it comes to the negative sense. सो जो आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होगा इन दैट टाइप, तो जो जनरल रूल इसमें अप्लाई होगा वो ये होगा कि आपके पास सब्जेक्ट होगा विच फॉलोड बाय द वर्ड, this followed by a word as, and then comes either adjective adverb, either of the two, followed by another word as, and then noun pronoun, either of the two will be in the sentence. Sometimes you may also see the word so instead of as before your adjective and adverb. In this position sometimes आपके पास instead of as so भी मौजूद हो सकता है before adjective और adverb, और ये उन कंडीशंस में होता है जब आपने एक नेगेटिव कंपैरिजन को ड्रॉ करना हो. इससे पहले हमने बताया कि इक्वल कंपैरिजन में आपके पास पॉजिटिव कंपैरिजन भी होगा और कैन बी में नेगेटिव कंपैरिजन कि वो बट जो आपको बात समझने वाली बात है कि वो इक्वल ग्राउंड्स पे ही आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं. इसको हम फर्दर समझते हैं. ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज फादर. सो जब आपने एज टॉल एज कह दिया है लेकिन आपने इसको कहा नॉट, तो यानी कि आपने इक्वल कंपैरिजन में नॉट के ज़रिए बता दिया कि कंपैरिजन सेम नहीं है. बट व्हाट इफ़ यू कैन वन थिंग कि आपने इस एज को जो जस्ट बिफोर ये एडजेक्टिव है, आप इसको एज के ज़रिए सो मेंशन कर सकते हैं. सो ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज फादर. सो जो आपका जो सेकंड एज है वो वहीं रहेगा, बट द वन विच इज़ बिफोर एडजेक्टिव आप उसको सो से कंपेयर भी कर सो से भी रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द नेगेटिव कंडीशंस and not otherwise. Now what important thing you have to remember is that the subject form of the pronoun will always be used आफ्टर एज इन द करेक्ट इंग्लिश. आपने जो इस एज के बाद जो आपने प्रोनाउन यूज़ करना है वो सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रोनाउन की टाइप्स, तो वो हम अपनी इनिशियल लेसन सीरीज़ में, टॉफल सीरीज़ की इनिशियल लेसन्स में हम इसको बहुत इन डेप्थ स्टडी कर चुके हैं. सो फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस टर्म्स, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले प्रोनाउन के लेसन को एक बार गो थ्रू कर लें, तो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना वुड बी रादर लॉट ईजियर. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ Peter is as tall as I. Again, the subject form of noun, pronoun, and this is again an equal comparison made कि दोनों का कद सेम है. या you are as old as she. Again, an equal comparison made between the age of the two people. Few more examples about equal comparisons. My book is as interesting as yours. So this is your adjective. As comes before adjective and as comes after adjective, and the noun will be in the pronoun will be in the subject form. It's an adjective way we're comparing. His car runs as fast as a race car. So this is an equal comparison made कि दोनों का कार का जो रेस है या उनकी जो इंजन कैपेसिटी है, to be precise, that is the same. Then comes John sings as well as his sister. So this is again equal comparison drawn. Their house is as big as that one. Their house is as big as that one. So there's again equal comparison drawn. These are all adjectives. The verbs, the adverbs are written on the front. His job is not as difficult as mine. So again जब आपने negative comparison draw करना था, तो आपने not को लिखने के बाद बाकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज सेम कि एडजेक्टिव से पहले भी एज है, एडजेक्टिव के बाद एज है और फिर सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है. दिस इज एन एडजेक्टिव. और अगर आपने इस एज को रिप्लेस करना है विद द वर्ड सो, बिकॉज वी नो बाय नाउ कि नॉट के जो नेगेटिव कंपेरिजन हैं उसमें आप एज को सो से भी कंपेयर से रिप्लेस कर सकते हैं. सो हिज जॉब इज़ नॉट सो डिफिकल्ट एज माइन. सो आप सो को पॉजिटिव कंपेरिजन में ड्रॉ नहीं करेंगे, पॉजिटिव में सिर्फ आप एज ही लिखेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू मेक अ नेगेटिव कंपेरिजन मेड
is selected, तो आपने not के बाद आप so को लिख सकते हैं before your adjective. Then comes another example which is like they are as lucky as we. So this is a subject form of pronoun and this is an adjective before it as and after it as. If it was a negative comparison, then we have an option of replacing this as with the word so, like as we did here. Now so far whatever we discussed, इसको आप एक और तरीके से भी कन्वे कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को टू मेक एन इक्वल कंपैरिजन. दैट इज़ कि आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा विच फॉलोड बाय अ वर्ब. This will be followed by the word the same. Then a noun comes which is given in parentheses, means कि ये optional है. Then a word as, and then a noun or pronoun, any of the two can be found in the sentence. So just pause your video and make a note of this formula. Now important thing to note is that the word as high as, which is as followed by an adjective followed by as, means the same as, the same, again height as. So आपने इस adjective को noun से replace किया और आपने as को replace कर दिया with the word the same. So the same height as means the same as high as. So जब आपने as एडजेक्टिव एज लिखें या द सेम प्रोनाउन सेम फॉलोड बाय नाउन और एज लिखें तो मीनिंग्स आर सेम. माई हाउस इज़ एज हाई एज हिज or my house is the same height. This high becomes, this adjective becomes the noun. My house is the same height as his. So the meanings are the same. So it's just another way of expressing your equal comparisons and the meanings have no difference whatsoever. अब इक्वल कंपैरिजन में भी हमने आपको स्टडी करवाया कि आपने कैसे एडजेक्टिव को आपने उसके नाउन में कन्वर्ट करके द वर्ड द सेम को ऐड कर लिया. सो बी श्योर दैट यू नो द फॉलोइंग दीज एडजेक्टिव्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नाउन्स. अभी हमने एडजेक्टिव हाई का कॉरस्पॉन्डिंग नाउन हाइट स्टडी किया. सो देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स विद देयर रिस्पेक्टिव नाउन्स जिनको आपको मालूम होना चाहिए टू मेक सच सेंटेंसेज इन फ्यूचर. दे आर ऑल मेंट फॉर द इक्वल कंपैरिजन्स टू मेक. सो दीज आर हैवी और लाइट के लिए जो आप इसका कंपैरिजन में नाउन यूज़ करेंगे दैट विल बी वेट. व्हेन कम्स टू कंपैरिजन्स टू मेक एडजेक्टिव्स लाइक वाइड एंड नैरो, तो आपके पास जो नाउन होगा दैट विल बी विड्थ. डीप एंड शैलो एडजेक्टिव्स आर रिप्रेजेंटेड विद द नाउन डेप्थ. लॉन्ग शॉर्ट एडजेक्टिव्स आर रिप्रेजेंटेड विद द नाउन लेंथ. और बिग स्मॉल आपके एडजेक्टिव्स को हम द वर्ड noun size से replace करेंगे to make equal comparison. So these are the nouns respective to these adjectives. So again pause your video here and make a note of these adjectives with their corresponding nouns जिनको आप यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग इक्वल कंपैरिजन्स. इंपॉर्टेंट एक और चीज़ रिमेंबर है आपको याद करने के लिए, वो ये है कि आपके पास जो द सेम एज का जो ऑपोजिट है वो है डिफरेंट फ्रॉम. आप कभी भी डिफरेंट देन नहीं लिखेंगे. दिस इज़ ग्रामेटिकली कम्प्लीटली इनकरेक्ट. आपने सिर्फ डिफरेंट फ्रॉम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं माई नेशनैलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर्स, आप कभी भी नहीं कहेंगे माई नेशनैलिटी इज़ डिफरेंट दैन हर्स. इसी तरीके से आवर क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैनेडाज, आप कभी भी नहीं कहेंगे माई क्लाइमेट इज़ डिफरेंट दैन. So the same as का opposite is the different from and never different than. This is grammatically absolutely incorrect. इसका अब हम कुछ और further examples भी study कर लेते हैं. The same as के frame की जिसकी हमने अभी sentence construction देखी है. These trees are the same as those. आपने the same लिखा है, आपने as नहीं लिखा जैसे आपने लास्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था. इसी तरीके से ही स्पीक्स द सेम लैंग्वेज एज शी. अगैन यहाँ पे देखिए आपके पास नाउन मौजूद नहीं है बिकॉज अगैन हमने कहा था नाउन पैरेंथेसिस में है, ऑप्शनल है, मौजूद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. बट हियर यू हैव द सेम फॉलोड बाय द नाउन देन द वर्ड एज कम्स एंड दिस इज अगैन द सब्जेक्ट नाउन ऑफ सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. हर एड्रेस इज द सेम एज रीटा's. अगैन नो नाउन हियर. Their teacher is different from ours. It's not different than ours. So again equal comparisons में the same as का opposite is different from and not different than. My typewriter types the same as yours. She takes the same courses as her husband. So the same as or as course as is the same. So आपने दोनों को interchangeably लिख सकते हैं. We are done with the equal comparison by now कि आपने as के साथ कैसे प्ले करना है, so को कब लिखना है और the same as और different from किस तरीके से इस्तेमाल करना है. Now अब हम comparison लिखेंगे, स्टडी करेंगे unequal comparisons. Now comes unequal comparison. This type of comparative implies that the entities which are compared they are comparable in a greater or lesser degrees. या तो वो ज़्यादा होंगी या वो comparably कम होंगी. So that's how we make the unequal comparisons.
सो अब इसमें आपने जब अनइक्वल कंपैरिजंस बनाना है तो इसके लिए आपके पास कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको अब हम स्टडी करेंगे. वी नो देम बाय नाउ, बट हमें उसकी ग्रामर की डायसेक्शन नहीं मालूम, तो हम इसकी ग्रामर की डायसेक्शन करेंगे. जब हम एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाते हैं तो व्हाट रूल्स शुड वी नो कि हमें इस्तेमाल करने हैं. सो पहला रूल ये है कि जब आपने एक एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है, जैसे कि आपके पास ई आर आपने ऐड करेंगे टू योर एडजेक्टिव बेस ऑफ द मोस्ट 1 and 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स. आपके 1 और 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स के साथ आपने उनको जब उसको कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है तो आपने ई आर को ऐड कर देना टू देयर एडजेक्टिव बेस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. थिक बिकम्स थिकर, जस्ट यू ऐड ई आर टू द बेस ऑफ योर एडजेक्टिव बेस. कोल्ड बिकम्स कोल्डर, adding er to your adjective base, and quiet becomes quieter. It's just one is more quiet or silent than the other one. So just how you make the comparisons when it comes to adjectives 1 or 2 syllables. Second आपके पास ये है कि जब आपके पास adjectives जो नॉर्मल आपके 3 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए आपने उनसे पहले जस्ट वर्ड मोर ऐड कर देंगे एंड येट द सेंटेंस इज ऑल गुड टू गो. फॉर एग्जांपल द वर्ड ब्यूटीफुल, इट्स अ 3 सिलेबल एडजेक्टिव. आप इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल को ऐड कर देंगे. जस्ट ऐड योर वर्ड मोर बिफोर योर एडजेक्टिव. इंपॉर्टेंट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड बिलीवेबल बिकम मोर बिलीवेबल. सो बाय नाउ यू नो 2 ऑप्शंस, 2 रूल्स कि आपके पास 1 और 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं तो आपने ई आर ऐड कर देना है टू योर एडजेक्टिव बेस, और अगर आपके पास 3 syllable adjective है so the word more comes in forward to your adjective. आपके पास थर्ड रूल ये है कि use the form more before adjective for the adjectives ending in the following suffixes. Besides 3 syllable adjectives, वो तमाम adjectives जिनकी जो suffix base है वो either ful है यानी कि full, important ant है, believable का able है, इस तरीके स्टाइलिश का ISH है, या कॉशियस का OUS. जिनके भी सिलेबल्स जो आपके सफिक्सेस ऐड करते हैं ED, फुल, ING, एंड OUS, ऑल दी सफिक्सेस आपके पास जहाँ भी ऐड करेंगे एडजेक्टिव्स में तो आपने उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए उनसे पहले आपने सिंपल मोर को ऐड कर देना है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. You just have to add this word more before it and you are all good to go when it comes to your adjectives. So आपने beautiful become more beautiful and your important becomes more important, believable becomes more believable, stylish become more stylish, cautious become more cautious. So that's how आपने equal comparisons unequal comparisons में adjectives को comparative बनाना है. So the fourth rule is कि double the final consonant of your 1 syllable adjectives which end in a single consonant excepting these 3 and are preceded by a single vowel. So what it says कि आपका अगर single syllable adjective है और उसका जो last word है वो सिंगल कॉन्सोनेंट है, जैसे G इज़ अ सिंगल कॉन्सोनेंट, D इज़ अ सिंगल कॉन्सोनेंट, हॉट का T इज़ अ सिंगल कॉन्सोनेंट, एक्सेप्टिंग दीज 3 अल्फ़ाबेट्स विच आर W, विच X एंड Z. इन 3 के अलावा अगर आपके पास सिंगल कॉन्सोनेंट एडजेक्टिव्स हैं सिंगल सिलेबल 1 सिलेबल एडजेक्टिव्स में तो उससे पहले दूसरी कंडीशन ये है कि उससे पहले आपके पास कोई सिंगल वाउल भी मौजूद हो विच आर प्रिसीडेड बाय अ सिंगल वाउल लाइक I, E, O, U, ईदर ऑफ द ऑल 5. तो आप ऐसे में क्या करेंगे, जो अपना लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके ई आर को ऐड कर देंगे. सो बिग बिकम्स डबल G एंड देन ऐड ई आर. रेड में आपने D को डबल कर देना है और ई आर ऐड कर देना है. इसी तरीके से हॉट में T को डबल करके ई आर ऐड कर देना है. सो ऑल 1 सिलेबल एडजेक्टिव्स विद द लास्ट सिंगल कॉन्सोनेंट आपने उसका सिंगल कॉन्सोनेंट डबल करके और प्रोवाइडेड कि उनसे पहले आपके पास कोई वाउल मौजूद हो तो आपने उसका ई आर ऐड कर देना टू देयर बेस. एंड दिस इज़ अनदर वे टू मेक अ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. नाउ फिफ्थ आपका रूल ये है कि व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, अगर आपके पास कॉन्सोनेंट है प्लस वाई तो यू जस्ट चेंज योर कॉन्सोनेंट वाई टू आई एंड जस्ट ऐड ई आर. हैप्पी इज़ अ एडजेक्टिव वेयर आपके पास कॉन्सोनेंट के बाद y मौजूद है और आपने उस y को कन्वर्ट किया है I में और उसके बाद आपने ई आर ऐड कर दिया है. तो P इज़ अ कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ y, तो आपने y को रिप्लेस किया विद I और ई आर ऐड कर दिया. सो हैप्पी बिकम्स हैप्पियर. ड्राई में y आपके पास है आफ्टर दिस कॉन्सोनेंट R, सो आपने y को रिप्लेस किया विद I and then add er, so dry becomes drier. It something having less, even lesser amount of water.
नाउ द ई आर सफिक्स मीन्स एग्जैक्टली द सेम एज मोर। जैसे अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं तमाम रूल्स में, कहीं हमने ई आर ऐड किया है, कभी हमने मोर ऐड किया है, बट हमने दोनों को कहीं भी कंबाइन नहीं किया। तो बेयर इन माइंड कि द सफिक्स ई आर मीनिंग्स द सेम एज द वर्ड मोर इटसेल्फ। सो जब भी आपने कंपेरेटिव बनाने हैं तो यू कांट गैदर द टू वर्ड्स टुगेदर। आप कभी भी ई आर और मोर को साथ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मोर प्रिटियर, तो ईदर इट्स प्रिटियर और मोर प्रिटी, बट इट कैन नॉट बी मोर प्रिटियर, ये गलत है। मोर फास्टर, आप फास्ट को फास्टर करेंगे या मोर फास्ट कर देंगे, विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बट इट कैन नेवर बी मोर फास्टर बिकॉज ई आर मेक्स लॉट्स मोर सेंस। इसी तरीके से मोर बेटर इज़ नॉट अ वर्ड, इट विल बी जस्ट बेटर इट सेल्फ। सो आपने वर्ड मोर और ई आर को गैदर नहीं करना बिकॉज बोथ है कि मीनिंग्स सेम है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे द रूल ऑफ रिडंडेंसी कि आप कभी भी सेंटेंसेस में दो लफ्ज़ जो इनकी मानी सेम हो उनको गैदर नहीं करते बिकॉज दैट्स नॉट ग्रामेटिकली मोर साउंड वे टू राइट। नाउ अब आपका अनइक्वल कंपैरिजन में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होगी। अभी तक हमने ये मालूम किया कि हमने एडजेक्टिव्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है जब टू मेक देयर कंपैरेटिव फॉर्म्स। नाउ आपके पास टू मेक देम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपके पास सब्जेक्ट होगा, दिस विल बी फॉलोड बाय द वर्ब, एंड देन दीज आर ऑल फोर वी डिस्कस्ड कि हमने एडजेक्टिव बेस में ई आर ऐड कर दिया या एडवर्ब के साथ ई आर ऐड कर दिया या आपने मोर ऐड कर दिया इधर विद एडजेक्टिव और एडवर्ब डिपेंडिंग हमने जो अपने रूल्स पढ़े थे, और या आपने लेस लिख दिया। अगैन हम जब अनइक्वल कंपैरिजन करें तो हम लेसर और ग्रेटर डिग्री में प्ले करेंगे। देन अ वर्ड द देन कम्स, अगैन दिस इज अ कंपल्सरी, एंड देन अ नाउन और प्रोनाउन ईदर ऑफ द वन कम्स। वन कैन ऐड ई आर टू ओनली अ फ्यू एडवर्ब्स। जहाँ पे आपने एडवर्ब के साथ ई आर देखो, स्टैटिक्स करने का मकसद ये कि आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आप ओनली देयर फ्यू एडवर्ब्स जिनके साथ आप ई आर ऐड करते हैं, नॉट एवरी एडवर्ब एक्सेप्ट दिस रूल ऑफ ई आर। सो व्हाट आर फ्यू ऑफ दोज, इट इज़ लाइक फास्ट से फास्टर हो जाएगा, क्विक से क्विकर हो जाएगा, सून बिकम सूनर, एंड लेट बिकम लेटर। सो इट्स जस्ट कि आपने देयर आर बियरली फ्यू एडवर्ब्स यू विल फाइंड कि जिनके साथ आप ई आर को सफिक्स के तौर पे ऐड करेंगे। इट्स अगैन एडिशनल इंफॉर्मेशन टू नोट यू डाउन। नाउ रिमेंबर ऑलवेज टू यूज़ द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन आफ्टर देन। जिस तरीके से इक्वल कंपैरिजन में एज के बाद हम सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को लिख रहे थे, इसी तरीके से यहाँ भी अनइक्वल कंपैरिजन में जब आप वर्ड देन लिखेंगे तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है दैट विल बी सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। एंड अगैन हम प्रोनाउन की पूरी सीरीज़ को पहले स्टडी कर चुके हैं, अपनी एक लेसन को स्टडी कर चुके हैं अपनी टोफिल सीरीज़ में। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉन्स ग्रेड्स आर हायर देन हिज सिस्टर्स। सो अगैन देन हिज सिस्टर्स, इट्स एन एडजेक्टिव, देन के बाद आपके पास सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। टुडे इज़ हॉटर देन यस्टरडे, इट्स जस्ट वन इज़ मोर देन द अदर वन। सो अनइक्वल कंपैरिजन में आप ग्रेटर और लेसर को की कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम्पल 3 इज दिस चेयर इज़ मोर कंफर्टेबल देन द अदर। सो इट्स एन एडजेक्टिव, यू आर मेकिंग कंपैरिजन, वन इज़ मोर देन द अदर। He speaks Spanish more fluently than I. It's an adverb. Fluently is an adverb. Then followed by a subject form of noun. He visits his family less frequently than she does. Again, more or less is showing कि आपके पास जो आपने unequal comparison है, that is either greater or lesser degree of comparisons. Then final example is this year's exhibit is less impressive than last year's. So again, it's an adjective where you are making a comparison compared to what exhibition you made last year. सो अब आपने अनइक्वल कंपैरिजन्स में बाकी सारे फार्मूलाज देखे। अब अनइक्वल कंपैरिजन में आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इसको फर्दर इंटेंसिफाई कर दें बाय एडिंग जस्ट टू वर्ड्स मच एंड फार। तो आप इन दो वर्ड्स के ऐड करके मज़ीद अपनी अनइक्वल कंपैरिजन्स में इंटेंसिटी ऐड कर सकते हैं टू मेक द एंटिटीज़ ईदर मोर ग्रेटर और लेस। फॉर एग्जांपल आपको जो सब्जेक्ट आपको जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगी उसमें सब्जेक्ट होगा विच विल बी फॉलोड बाय द वर्ब एंड द वर्ड ईदर फार और मच कम। अगैन दीज आर द इंटेंसिफायर्स followed by either adjective or adverb. Then a word er comes, again depending कि आप जब इसको बना रहे हैं अपनी comparative form, और आपने word then आएगा which is again signature when it comes to unequal comparison, and then noun pronoun. This sentence can also be written as, this sentence construction can also be made like subject and verb followed by far and much, the same intensifiers, and then more or less आप ऐड कर लें because we know जब हम er ऐड करते हैं तो more or less का means the same हो जाता है, तो हमने कभी नहीं लिखना होता। but since हम यहाँ पे er को skip कर रहे हैं तो you can add these two words more or less, and then again the same sentence construction where we have adjective or adverb, either of the two, followed by the word then and then noun and pronoun. So इसको further study करते हैं examples के ज़रिए। Henry's watch is far
more expensive than mine. So यहाँ पे आपने far ऐड करके intensity ऐड कर दी अपनी जो comparison आप draw कर रहे हैं towards the amount of expense you spent on your watch or somebody else is spent on watch. Then second example is that movie we saw last night was much less interesting than the one on television. So आपने much के बाद less भी add करके मज़ीद again this is added as an intensifiers to make comparison more dramatic or intensified. A watermelon is much sweeter than a lemon. So again this is a noun after the word then. Much आपने ऐड किया तो आपने यहाँ पर उसके बाद आपने more or less ऐड नहीं किया, rather आपने जो ई था ऐड किया. तो it's the first form of question formula we studied last slide. She dances much more artistically than her predecessors. So then again आपने much के साथ more ऐड कर सकते हैं, much के साथ less ऐड कर सकते हैं. In that case फिर आपका जो adverb adjective है उसमें er के suffix ऐड नहीं होगा. That's how you have to construct the sentence. He speaks English much more rapidly than he does Spanish. His car is far better than yours. So far unequal comparison में हमने देखा कि हमने उसको सारी sentence construction को intensify कैसे कर सकते हैं. So हमने उसको study किया with different intensifiers. अब हम देखेंगे कि what if अगर आपके पास जो comparison आपने बनाना है वो instead of adjective वो adverb के अगर वो noun हो तो how to make those comparisons. In that case आपके पास आपको determiners use करते हुए ये surety होनी चाहिए कि आपका जो noun है वो countable है या non countable है. That will determine what determiners must come in it precedes to your noun. For example sentence construction like subject followed by verb followed by the word as. इसके बाद आएगा much, many, little and few. This is again when it comes to depending what noun you are using and followed by the word as and then a noun pronoun comes. अगर आपने then के साथ sentence construction create करना है तो that will be subject followed by verb followed by the word as and these three determiners like more, fewer and less will come and then followed by the word noun and then the word then comes and the noun pronoun will be part of the sentence construction. So that's how these sentences will be used. I hope आप उस point पे अपनी video pause करके इन formulas को अपने पास note down करके कर लें ताकि आपको ये memorize रहें for the rest of your life. अब हम इसकी कुछ examples को देख लेते हैं. I have more books. I have more books than she. I have more books than she. Followed by February has fewer days than March. February has fewer days than March. He earns as much money as his brother. As his brother. Example 4, they have as few classes as we. They have as few classes as we. Their jobs allows them less freedom than ours does. Again यहाँ पे जो words determiners less इस्तेमाल हो रहे हैं, few, much, fewer, they are determining कि आपने इसके बाद then का formula इस्तेमाल करना है या as के साथ इस्तेमाल करना है. And again these word selection are dependent on your noun to be compared. And the final example is before payday. I have as little money as my brother. I have as little money as my brother. So again इन दोनों formulas को आपने ज़रूर in mind रखना है ताकि आप comparisons को properly create कर सकें. So this was all about equal comparisons and unequal comparison. Now starting off with an illogical comparisons, what does it actually mean? Now illogical comparisons में आपके पास it's like that is the one in which unlike entities have been compared. So far we were talking about greater or less, equal or unequal. What if कि आप जो entities compare कर रहे हैं they are unlike. Be sure one thing that the items you are comparing they are the same. It's the entities which are different, which are unlike. These forms can be divided into 3 categories. इस तरीके के जो आपने illogical comparisons बनाने हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं. वन इज़ अबाउट पोजेसिव्स जिसको हम अपोस्ट्रोफी के साथ इस्तेमाल करते हैं. देन अ वर्ड दैट ऑफ एंड दोज ऑफ. These 3 are the actual categories जो कि हम यूज़ करते हैं to make an illogical comparisons. One more thing कि आपकी जो entities होंगी वो फ़र्क होंगी but जो आपके items that you are comparing they should be same. इसको हम further example से भी clarify करेंगे. For example, to make an illogical comparison, आपके पास अगर sentence है कि his drawings are as perfect as his instructor, तो इस sentence में हम actually एक आदमी या एक शख्स की drawings को उसके इंस्ट्रक्टर से कंपेयर कर रहे हैं and not with the drawing of the instructor. So it's an illogical it's a wrong comparison to make because we are asked that हमारी जो categories हैं वो सेम होंगी, entities can be फ़र्क.
So this sentence compares the drawings with instructor, which is wrong. To make the sentence correct, आप कहेंगे this his drawings are as perfect as his instructors. So आपने apostrophe s के ज़रिए जो drawing की possession थी वो आपने instructor के साथ show किया, तो now the sentence makes sense that now you are comparing the drawings of a guy with the drawings of his instructor. So instructor's drawings. Now the sentence makes sense. Another example, the salary of a professor is higher than a secretary. So the sentence is actually comparing the salary of a professor with the secretary herself, and not with the salary of a secretary, which is a wrong sentence, which is a wrong comparison to make. So to make the right comparison, the salary of a professor is higher than that of a secretary. So now the word that of is referring to a salary of a secretary. So instead of writing the whole lot of the salary of a secretary, आपने just word that of add कर दिया before the word secretary, and now it means this, you are comparing the salary of a professor with the salary of his or her secretary. So that's how you making a right comparisons. Again, it's a logical comparisons. You should know कि आपकी जो कैटेगरीज हैं दे शुड बी सेम डिस्पाइट कि आपकी जो एंटिटीज़ है फ़र्क है. यहाँ पे प्रोफेसर सैलरी और सैलरी सेम है, सैलरी सेम एंटिटी आपके सेम कंपैरिजन हैं जिन पे आप बात हो रही है. ऑल्दो दे आर इट्स अबाउट द प्रोफेसर एंड द सेक्रेटरी, और इट्स अबाउट द ड्राइंग ऑफ the drawings of man or drawing of its instructor. So that's how you should know कि आपके पास आपने जो entities हैं वो फ़र्क हों, लेकिन जो आपके items हैं they should be same. Another example, we talk about the possessive, we talked about that of, now comes those of. So what about those of, how to make use of it? The duties of a policeman are more dangerous than a teacher. So this sentence actually means that this sentence compares the duties of a policeman with a teacher. So duties are compared with a person, which doesn't make any sense to make comparisons. Now to make the right sense, the duties of a policeman are more dangerous than those of a teacher. So the word those of is actually referring to the duties of a teacher. So now we are comparing the duties of one person to the duties of another person. So despite कि आपके policeman or a teacher are two different entities, but the items we are comparing, which is as duties, are the same. So that's how the word those of comes in to make this a logical comparison and to make the sense, whole lot of sense of the sentence. इसको हम further example से भी clarify करते हैं. The first example is John's car run better than Mary's. So now it's Mary's apostrophe is about the possessive and it means Mary's car. So you just write the apostrophe s and the sentence will make sense. The climate in Florida is as mild as that of California. So now the word that of is referring to the climate of California. It's just that simple. Then comes classes in the university are more difficult than those in the college. So the word those in referring to the classes in the college. The basketball game at the university are better than those of high school. So the word those of is referring to the games of high school. Your accent is not as strong as my mother's. So the mother's is actually referring to the accent of a mother with apostrophe s, which is possessive. And my sewing machine is better than Jane's. Again, it's Jane's apostrophe s referring to the sewing machine of a Jane's. So remember, आपकी entities फर्क होंगी, but items can be same because Jane and me are two different entities altogether. But the items we are comparing are the sewing machine. So there has to be some common ground to compare. We spoke about equal unequal comparisons and then illogical. Now comes the category of an irregular comparison. So without further ado, let's start the comparison study. Here comes irregular comparatives and superlatives. A few adjectives and adverbs have irregular forms for the comparative and superlative. So let's look at these things. So we have some of the list of adjectives and adverbs here on the slide. ये हमारे adjectives and adverbs हैं. ये इनके comparative forms हैं, and now they have these superlative forms as well to make which is actually we call as irregular forms of their comparative and superlative. अब हम उनको study करते हैं, starting with the first one, which is far. इसकी जो comparative होगा that can be farther and further. So हम farther and further से इस comparison को, इसकी comparison को draw करेंगे. And the superlative form is the farthest and the furthest. You just add est in the end. Then comes another little, it's an adjective. इसकी comparative form होगी less, and to make its superlative, which is an irregular form, we call it least. Much and many, they are their comparative forms. Again, much and many we know, हम पहले study कर चुके हैं count, noun count के lesson में. They are respectively used for
non-count and the count nouns. So the much and many का comparative form होगा more and इसकी superlative form होगी most. Then comes the adjectives good and well, and good and well का जो comparative form है that is better, and इसकी जो superlative degree है that is called as best. The word, the adjectives bad and the adverb badly, their comparative forms is worse, and to make it superlative it's called as worst. अब इसकी हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं रिगार्डिंग टू इरेगुलर कंपैरिजंस एंड सुपरलेटिव्स. आई फील मच बेटर टुडे देन आई डिड लास्ट वीक. सो मच बेटर इज कंपैरिजन मेड फ्रॉम योर यस्टरडे the last week whatsoever. The university is farther than the mall. So again just a word farther is showing the amount of distance you are supposed to cover. He has less time now than he had before. The Marjorie has more books than Sri. This magazine is better than that one. He acts worse now than ever before. He acts worse now than ever before. So this is all about the comparison chapter, जिसमें हमने स्टडी किया कि आपने कंपैरिजन में इक्वल कंपैरिजन्स को कैसे करना है, अनइक्वल कंपैरिजन्स को किस तरीके से ड्रॉ करना है. सो वंस वी आर डन विद दिस, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें इन कॉन्सेप्ट की फर्दर क्लैरिटी हो जाए. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास ये सेंटेंसेस हैं. हर सेंटेंस में आपके पास एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आपके पास पैरेंथेसिस में मौजूद हैं, और आपने एज, लेट एज एंड देन बाय योर क्लूज आपके पास एज मौजूद हैं एंड देन मौजूद हैं. अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट करना है कि आपने क्या कहते हैं अपना जो एडजेक्टिव है, जो पैरेंथेसिस में एडजेक्टिव एडवर्ब है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है. सो अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट इट. सो इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ अबाउट 10 क्वेश्चंस. आपने इसमें कंसिडरिंग योर एज एंड देन कंसिडरिंग दैम एज क्लूज आपने इन एडजेक्टिव्स को और इन वर्ब्स को प्लेस करना है, सेलेक्ट करना है इन योर blanks. These are the 5 questions. 5 more questions here on your screen. ये 10 questions की एक्सरसाइज है. आपने इसके अंदर इन ब्लैंक्स के अंदर सही एडजेक्टिव के फॉर्म्स को लिखना है. So if you're done with the questions answered by now, हम answers start करते हैं. So the answers are coming on the screen now. First question is, John and his friends left as soon as the professor had finished his lecture. So we had the word as after. So we just write this as soon as the professor had finished his lecture. Second, his job is more important than his friends. So again we had the word then here. तो यहाँ पर आपने more को add करके more important करके इसको comparison create किया है. He plays the guitar as well as Andreas Segovia. So आपने यहाँ पे as को, जैसे हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि आपने as और then को as clue यूज़ करके सही फॉर्म इस्तेमाल करनी है. तो you just write this is as well. A new house is much more expensive than an older one. So आपने then के साथ comparison में जो फॉर्म बनाई है वो है more expensive. Question 5 is, last week was as hot as this week. So we have as here as a clue. So यहाँ पर जो इसका comparison में बनेगा that is as hot. It's not then here. So आप यहाँ पे hotter नहीं बना सकते. It's just as hot as this week. The question 6, Martha is more talented than her cousin. We have then here as a clue, so we make it more talented than her cousin. Question 7, Bill's description are more colorful than his wife's. So it's more colorful because we have then as a clue here in the sentence. Question 8, nobody is happier than Maria. So it is the word happy here. So and the Maria then is here. We have accordingly we can make it happier. If it was just as here, we can say it is as happy as Maria, because then you know according to as and then कि आपने क्या equal comparison draw करना है या unequal comparison create करना है. Question 9 is, the boys felt worse than the girls about losing the game. So again it's then. So accordingly आपने comparative form यहाँ पे create करनी है. Bad की worse होती है. You cannot make it more bad or less bad. Question 10 is, greyhound runs faster than a chihuahua. So again आपने then था तो आपने comparative form of adjective लिखी है. So this was exercise 1, जिसमें हमने as और then को clue के तौर पे यूज़ करते हुए सही form of comparison create की with the adjective and adverbs given in parentheses. अब second exercise हमारे पास है जिसके अंदर हमने as
देन एज और फ्रॉम को हर सेंटेंसेस के अंदर प्लेस करना है. अगेन इसमें हमारे पास एडजेक्टिव्स को हम एज अ क्लू देखेंगे कि हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, वेदर इट्स इक्वल कंपैरिजन और अनइक्वल कंपैरिजन अनरिगार्डलेस. सो हमारे पास 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है. पॉज योर वीडियो है, फिल दीज 5 blanks in with either of these 3 in all them and then proceed further to these 5 questions. So once you are done, then हम इसके आंसर्स को स्टार्ट करेंगे कि हमने किस तरीके से इसको स्टडी करना है. So for those who are done with the answers by now, अब हम स्टार्ट करते हैं. Now the question. Now that we come on to the answers, now start and discuss the answers. The first question was the Empire State Building is taller than the Statue of Liberty. So is taller? It's about an unequal comparison. We have a comparative form, so the word then comes here because of unequal comparison. Second question is California's farther than New York than Pennsylvania. Again, it's an unequal comparison. So with this superlative comparative form, the word then comes in. Question 3 is his assignment is different from mine. So is different from is opposite. It's the same of equal comparison but in opposite sense. So the word from comes in. It can never be is different than. Question 4, Louis reads more quickly than his sisters. So more quickly is an unequal comparison. So the word then is used here. Question 5, no animal is so big as King Kong. It's an example of equal comparison. So the word so followed by adjective and the word as comes in. It can be as big as if we have to make equal comparison but in the positive sense. It's an example of an equal comparison. It's an equal comparison but in the negative sense. Question 6, that report is less impressive than the government's. Again, the less impressive is a structure for the unequal comparison with an intensifier, so the word then comes in. Question 7, Sam wears the same shirt as his teammates. So again, it's an example of equal comparison, so the word as should be here before your nouns in the sentence. Question 8 is Dave paints much more realistically than his professor. It's an example of unequal comparison. We can study from these more realistically and much intensifiers, so we have to use the word then here. Question 9, the twins have less money at the end of the month than they have at the beginning. It's an example of equal comparison with these modifiers less, so we just have to place the word then here. Question 10, her sports car is different from Nancy's. It is again example of equal comparison. And since the word is different from, हमेशा यूज़र को कभी different than use नहीं होगा. It's the same as if you use the word the same as Nancy's or the same as को different from लिख सकते हैं. It's the opposite, but again it can never be different than. So that's how you have to place the word as, then and from in all these blanks. If all this makes sense, like to my video, subscribe to my channel and share with your friends and family. I hope अब आपको comparison के बारे में कोई ambiguity नहीं होगी. If you have still some left, you may write on in the comment section below. Thanks for watching this video.